हेलो सांजी ब्रो, वेलकम। अरे नाम चेंज कर दिया क्यों अभी? बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग वैसे। Rise with the sun. Goose on the loose. Pinnacle of excellence. Think you can bully me? Can't have your dreams. अपन तो खाली अभी सपोर्ट दे रहे बस। अरे प्लंज अटैक यूज क्यों नहीं कर रही है? अभी का ही कर सकती है अपनी खाली प्लंज। शायद नहीं हो गए, क्यों लग रहा है? अरे यहाँ पे फील्ड है। Try and stop! Brace yourself! I'm flying! Goose on the You loose! can bully me? चैलेंज फेल हो गया ये वाला। ये Lizard tail, defeat pepper, opponent star inside conch. safe zone. What else 24 do I opponents. need to create the most dreadful ये safe disgusting zone The world's होता है। shadow. It's always there. ये It देखो will never स्कर्ट perish. बढ़िया है कैरेक्टर। Think you can bully me? Goose on the loose! A dash of frosting! Can't have your dreams. अरे सेफ जोन के बाहर नहीं जाना है। तो ये लोग तो पूरे बाहर जा रहे हैं। भाई उनको अंदर आने दो। ये लोग तो अंदर आ भी नहीं रहे क्या? Annihilate!
Mine. Gonna go back to it. Try it. Yeah. लगता है ये भी फेल होने वाला है चैलेंज। A dash of frosting. सेफ जोन रिंग भी हो रहा है। Boost on the loose. Think you can bully me? Can't handle your dreams. Rev the engine. Up to the freezer. Gonna go back to it. Mine to win. Yeah. Look at you, Bluetail. फेल हो गया नहीं, ये कंप्लीट हो गया। ओके बढ़िया बढ़िया। मेरे को तो लगा ये वाला भी फेल हो जाएगा करके, पहला वाला फेल हुआ है तो। Think you can bully me? Diana Special. Show no fear. A burst of flavor. Up to the freezer. Hamster. Look at you, Bluetail. Sky. Shoot on the loose. Rev the engine. Think you can bully me? Can't handle your dreams. A burst of flavor. ओ भाई Dash of frosting. 2 लाख बढ़िया। Think you फिर can bully इसकी me? मौली का इतनी बिल्ड नहीं है, Gonna go back to it. यार नहीं Freezer. लगेगा। अभी तक क्या आधा ही हुआ है। Try it. Boost on the loose. Look at you, Bluetail. कहाँ पे गिर गया वो वर्ड? ओ भाई गलत, भाई बिल्कुल गलत। Take an hamster. कौन सब्सक्राइब दिया है? किसको दिया? भाई वर्ल्ड कहाँ पे गिर गई? बहुत ही गलत। हेलो नूडल्स ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रो। भाई अपनी टीम गलत थी है, कुछ इतनी खास नहीं है मुझे। चैलेंज हुआ है कि नहीं देखना पड़ेगा। 2 अगर अपने को रिवॉर्ड मिल गए तो बढ़िया हो जाएगा। फिर एक और बार लास्ट बार करना पड़ेगा प्राइमोस के लिए, उसके बाद तो हो जाएगा। फिर मोरा के लिए इतना करने मन नहीं मेरे को। रिवॉर्ड देखने को कुछ नहीं मिला। ओ भाई मिल ही नहीं क्या मेरे को? ओ गलत। 350। अरे ये अपना आज बढ़ नहीं रहा है क्या? आफ्टर द इवेंट begins the maximum number of points challenge will increase by 200 every। अच्छा आज नहीं होगा ये। ओके ओके, Instead of तो confining फालतू किया themselves है। to the heavens, God should ये मेरे को broaden their लगा horizons in the world एवरीडे below. रिसेट होता है क्या? वो आज तो वेस्ट रहा अपना। चलो जाने दो, फिर अपन क्वेस्ट कर लेते हैं। अपनी एक मेन आर्कन क्वेस्ट रही भी है, वो कर लेते हैं। ओपी से बाहर निकलना पड़ेगा। चाय बना रहा। ओ भाई आ रहे फिर हम भी पीने को, हमारे लिए भी बना दो।
यहाँ पे है ना टेलीपोर्ट पॉइंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बना दो हमारे लिए भी। क्या ब्लैक टी बना रही क्या? Exploration and trials. Adventuring is right ऊपर up my जाने का। alley. मेरे को यार मूवी का के लिए सपोर्ट कैरेक्टर देखना पड़ेगा कोई। Malika! मेरे पास सपोर्ट कैरेक्टर की इतनी कमती है, टीम ही नहीं है मेरे पास अच्छी। Oh? Ah, great timing, Yansan. I was just about to send यंसन बिल्ड someone करनी for you. पड़ेगी। यंसन बढ़िया And है it's good बोलते to see मूवी the का, के साथ travelers with काम you. चल जाएगा। How are things looking? What's the latest word from the messengers? यंसन चेवरुस The बेनेट और Abyss मूवी का Order has been ऐसी spotted near टीम several चलानी पड़ेगी tribes मेरे at the को। same time. Clearly, this is a coordinated strike. Also, their numbers are much higher than expected. Their organization appears to have grown considerably, but because they're usually so secretive, this is the first we're learning of it. It sounds like they're throwing everything they have at us. यंसन What are they अपडेट trying करना to वर्थ इट achieve? है। That's what I'd like to know as well. Historically, Natlan has not been a hotbed of Abyss Order activity, and we have no particular quarrel with them. Could it be revenge, perhaps? Would they want to get back at us for a recent victory over the Abyss? Oh, seems unlikely. But बाय द वे then जो भी again, लाइव पे एक Paimon लाइक कर wouldn't देना let प्लीज। anything past the Abyss Order. It's too early to say anything definite. For the time being, we should continue monitoring the situation. How are the battles going? ऐसा चालू है Not यहाँ too पे। many casualties, hopefully. सीरियस कंडीशन हो गई नेटलैक। Well, even if they're committing all their forces to the fight, they're in for a tough time. Our brave warriors have just emerged victorious from an all-out fight against the Abyss itself. Yep. We have a whole nation's worth of seasoned veterans fighting for us. Compared to the true Abyss, the Abyss Order poses a far smaller threat. They cannot endlessly replenish their forces for अच्छा starters. अबिस और अबिस ऑर्डर However, डिफरेंट this है is still a war, so we must give it our all and do our utmost to minimize casualties. The tribes are organizing their defenses as we speak. Traveler, this is one war that Natlan can handle on its own. If you wish to stay out of it, you'll be safe here at the stadium with me. नो दिस वन इज पर्सनल फॉर मी। ओके अभी Oh? बता रही हो क्या In हुआ। what way? द करंट लीडर ऑफ द अबिस ऑर्डर इज माय ब्रदर। अभी खतरनाक Yep, इंटरेस्टिंग होगा। that's how it is. स्टारलाइट गिव गिव करना से लाइक करेगा। I see. पहले लाइक करो My भाई, फिर goodness, स्टारलाइट that गिव अवे is होता है। very personal indeed. If you don't mind me asking, पहले लाइक कर do दो, you have any फिर idea what his स्टारलाइट goal गिव could अवे be? रखेंगे अपन कभी। क्या बोल रही है? इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट हिज गोल कुड बी? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। Safe to say, they're not exactly on the best terms at the moment. Ever since Paimon met the पाइमान Traveler, को सब she's been पता trying रहता to track her brother down and get some answers. But he's been avoiding her. I see. So you two have fallen out. Huh. A pretty common occurrence between siblings. Well, yeah, that may be. But the stakes are a little higher where these two are involved. They certainly are. Although somehow it doesn't surprise me that a spat between the Traveler and Twin could affect the fate of the entire world. Just so I'm clear, you're still on Natlan's side, and you have no idea what your sibling is after. Is that right? I might even hate the Abyss Order more than you do. Well, that's a relief. When you first mentioned your sibling, I was worried we were about to be thrust into an impossible position. Our reports say that the Abyss Order has focused most of their efforts against the Masters of the Nightwind. If you don't plan on staying here with me, I'd recommend going there to lend them a hand. I'll join you. Right now, the Collective of Plenty isn't facing a serious threat, so we should support the अरे other मैंने tribes. ये नहीं किया Many रात को thanks, you डोमेन two. मेरा फुल हो गया होगा। Anything you need, पहले send डोमेन word to कर me लेते right फिर away. क्वेस्ट कंप्लीट करते। डोमेन बाकी होगा।
मोबिका से बात कर रही है भाई, कर लेंगे अपन। And don't worry, you're still Natlan's hero. I'm not gonna blame you for something your sibling has done. Still, if we manage to find your brother, you wouldn't mind if I gave him a good punch to teach him a... टोटली फुल ब्रो इधर से। And don't worry, you're still Still, अपने को यार पहले डोमेन करना पड़ेगा। फुल हो गया ना ये मेरा। हाँ, वर्ल्ड वॉच भी बाकी है। क्या करते थे, डोमेन कर लेते ना। उसके बाद क्वेस्ट कंटिन्यू करते। डोमेन का भूल ही गया था मैं। और अपना रिफ्रेश नहीं हो रही है कि चैट, क्या दिक्कत है यार चैट रिफ्रेश होने का। सब कैरेक्टर को दिखाओ। ओके ओके भाई, मेरे पास ज्यादा नहीं है। देखो अपने पास 5 स्टार मैंने निकाले हुए मूवी का काजुहा। उसके बाद स्क्वायर के अपने पे ये बेस्ट कैरेक्टर लगी मेरे को अभी तक की निकाली हुई। उसके बाद सेकंड बेस अपना काजुआ था, लेकिन यार बहुत ही ड्रॉप हो गया वो सपोर्ट में, अभी कुछ टीम के साथ चल नहीं रहा है। फिर रेडन है अपने पास, फिर आयाटो है। आयाटो भी बहुत बढ़िया लगता था मेरे को, और इसका डैमेज बहुत ही नर्फ कर दिया। मतलब पुराना कैरेक्टर है ना, डैमेज ही नहीं देता, इसलिए यूज नहीं, ज़्यादा यूज नहीं करता भी मैं इसको। अभी रिप्लेस करना चाहता तो सही मैं स्कर के साथ, लेकिन मेरे पास टीम ही नहीं है स्कर की, इसलिए फिर अभी मोबिका से काम चल रहा। फिर मोबिका की टीम पहले बना था, फिर बाद में स्कर की देखता। वैसे दोनों को सेम सपोर्ट चल जाता है, तो देखते अभी शीतलाली पुल करने का प्लान है। और ये हूताओ निकाली थी मैंने, ऐसे कैरेक्टर है अपने भी। Ad Astra Abyssosk. Welcome. Thank you for complete. Ad Astra. 5 स्टार C2 C3 तो मेरे बिल्कुल भी नहीं है भाई, C1 भी नहीं है मेरे। तो C2 C3 बहुत दूर की बात है, लेकिन मैंने वेपन निकाले हुए, बस वेपन का मैंने वेपन ट्राई करता हूँ। लाइक मेरे पास अभी, अरे अरे इसका क्या इशू हो रहा है ना, चैट का चल नहीं रहा है। मेरे पास वेपन है, कैरेक्टर के वेपन निकाले हुए मैंने, रेडन का वेपन निकाले हुआ है, अयाटो का भी निकाले हुआ है। ये 2 कैरेक्टर के वेपन निकाले हुए मैंने, बाकी तो फिर मेरे को मिले नहीं। अपने पास हो गए अभी, कम ही हो गए लेकिन। चैट डिले हो रही है काफी काफी, मतलब चैट का देखना पड़ेगा। C2 C3 निकालना बहुत मुश्किल है सांची भाई। यहाँ पे मेरे एक कैरेक्टर में निकल रहा है ठीक से। अपने को अभी इसके लिए तो शायद फार्म है अपने पास, ये 17 है। ये बाद में करोगे, बाद में कर लेंगे। अभी फिर ये कर लेते अपन, ऑब्सिडियन आर्टिफैक्ट फार्म कर लेते।
सिंचू को लगा कि फायदा भी नहीं है मोबिका की टीम पे, पर क्या अभी कुछ है ही नहीं और लगाने को, तो वही यूज कर रहा मैं। यंसन को अपग्रेड करना पड़ेगा मेरे को, यानी अच्छी टीम होगी फिर। The wind knows me. Know my sword. Witness the power of Gugwa. Fallen leaves, adorn my night. Full throttle, breath from the sky. Incinerate! Everybody stand back. Rain outlines your fate. आर्टिफैक्ट की इसमें मेरी किस्मत बहुत खराब है भाई, ये आर्टिफैक्ट मिलता ही नहीं है मेरे को अच्छा। ये एचपी का है। कुछ काम का नहीं है, लॉक क्यों हुआ पता नहीं। तो इधर भी एकदम बकवास है ये दूसरा वाला। One with nature. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Clouds high. The birds call. Teamwork is dreamwork. Pyroclastic surge. कैट लोड क्यों नहीं हो रही, क्या सीन है ये? कैट का कुछ देखना पड़ेगा मेरे को, वीडियो वगैरह। वो भाई 3 आर्टिफैक्ट मिले जो कि मेरे को चाहिए ही नहीं थे। क्रिट डैमेज है तो इसको लॉक कर देता। एचपी का ये मेरे को काम का नहीं लग रहा। I'm going in. Let's light it up. Witness the power of Gugwa. As one with wind and cloud. Try and stop me. Rain outlines your fate. Into the wind. मेरी मूवी का भी बहुत काम करना पड़ेगा। मूवी Breath from the sky. डैमेज बहुत कम डैमेज है मूवी का। अरे भाई जो आर्टिफैक्ट चाहिए ही नहीं वही दे रहे हैं, गलत ही सीन है। One with nature. Teamwork is dreamwork. Rain cutter. Fallen leaves, adorn my night. Wind strider. Rev the engines.
बहुत कम हिट दे रही, 60-70,000 मिनिमम देने को नहीं दे रही। Rain outlines your fate. The wind knows me. Full throttle! भाई अभी कोई आर्किटेक्ट मिल जाए अच्छा तो बढ़िया होगा। क्रिट रेट ओके, इसमें क्रिट डैमेज निकलने से बढ़िया है, ये बकवास है। One with nature. Going in! Clouds high. The birds call. Let me weave you a bird. Rev the engines! Light up the blazing sun! फ्लावर ओके, बकवास पावर है, ये भी बकवास है। यानी कि आज को एक भी ढंग का आर्टिफैक्ट मिला नहीं अपने को। देखते अभी वो अपग्रेड करके क्या है, तो उम्मीद तो है नहीं उससे मेरे को। ये है ना, नहीं ये नहीं है, कहाँ पे हो? इधर था कि अच्छा फ्लावर था, ओके। क्रिट डैमेज निकल जा भाई, अटैक काम का नहीं है। अनलॉक कर देते इसको, बाकी तो फिर आज को एक भी ढंग का नहीं निकला। बाइक वूमन मेरा रेशियो बहुत गंदा है यार, मतलब 43:201, उससे मेरे को वेपन भी नहीं है मेरे पास। वेपन भी है बकवास बकवास वेपन लगा के रखा है। वर्ल्ड बॉस करूँ अभी बाद में करूँ, बाद में कर लेते वर्ल्ड बॉस, अभी जाते क्वेस्ट पे। तो वैसे भी ये तो मैंने खाली कर दिया। क्वेस्ट कहाँ पे वैसे अपनी, यहाँ पे। If you gift me starlight, then your luck will shine. Look, it's Eulalie. चितलाली चाहिए भाई Huh, अपने को, I चितलाली wasn't बढ़िया expecting to कैरेक्टर see है you सब। here. Are you here to reinforce us? How are things looking? Mawika told us to come here. Oh, the situation must be pretty dire if it's managed to get Lali out of the house. Dire? No, I wouldn't go that far. It's mostly just irritating. I heard we're being hit the hardest out of all the tribes. What are they trying to imply? They just think we're pushovers or something? The more I thought about it, the angrier I got. I couldn't exactly concentrate on my novel after that, so... Well, here I am. So, that's how they earned the ire of Granny Eatsley, huh? They call themselves the Abyss Order, yes? Ugh, so tasteless. It's exactly the kind of two-dimensional name a clueless writer picks because they don't trust the rest of their writing to persuade the reader of who the real villains are. Hey, she's saying your brother has poor taste. I'm just glad I'm not the only one who thinks that. Wait, what? Are you saying her brother is a member of the Abyss Order? I only said that because I was mad, but maybe I went too far. Hey, let's save the chat for later. We've got some enemies incoming. Good.
A much-needed chance to vent my frustration. You didn't have to say that last part out loud, Sweet Lolly. Anyway, It's let's great get him! तितलाली भी यूज करने को मिल रही है मेरे को। ओ भाई, क्या है इसकी स्किल मुझे पता ही नहीं यार। Get to work! Let's light it up! Everybody stand back! Full throttle! कितना डैमेज दे रही है? 21,000 तो देखी है। Try and stop me! डैमेज टेस्ट, अरे भाई हुई नहीं अपनी डैमेज टेस्ट। Phew! किसी और के साथ Impressive डैमेज work. टेस्ट करनी पड़ेगी। If anyone, Experience इसके says पास that if we head in the तितलाली है। direction they were attacking from, we should find their stronghold. Why don't we press our advantage and destroy their base? They won't know what hit them. Hey, मस्त was यार there a battle तितलाली here यूज just now? करने में भाई। Need any help? मिलनी चाहिए तितलाली अपने को। The warriors from the Masters of the Nightwind are here! The battle against the Abyss is still fresh on our minds, so everyone's used to working together. Well, morale's high and everyone's here. Let's go take down that stronghold! ओह बढ़िया। fulfill our pact! वापस यूज करने मिल रही है। Gotta be strong! Show no... Going in! शील्ड होके साला ऐसे क्यों हो रहा है? टाइम पास करने है अपने। Fulfill our pact! आगे इसकी अड़ी। Lolly, Yeah. East Papa, get pyroclastic surge! Forward! ओ भाई भाई Crush भाई। them! 37 क्या था? भाई Full throttle! खतरनाक डैमेज दिया है। 4,000 अराउंड था। 4 लाख 4 लाख अराउंड था। भाई गलत डैमेज। बढ़िया है वैसे इतलाली टीम के लिए। दिखने में भी कैरेक्टर जबरदस्त है। लेनी पड़ेगी ये। आई विल कम लेटर बाय। ओके ओके सांजी भाई मिलते हैं बाद में। चलो बाय बाय। Created by William Abyss and chaos will constantly absorb nearby character elemental energy and convert into void ward. So this was as to be What is that thing? It's like it's draining the strength right from my body. Find a way to destroy it! The Abyss Order's resistance is faltering. Now's our chance! Teamwork is dreamwork! You two! Time to end! Wrath from the skies! Warriors! Attack! After them! भाई कितना डैमेज दे रही है। इतलाली मस्त है यार मूवी का के लिए। डैमेज भाई मैंने अभी तक तो बिल्ड भी नहीं करी है मेरी मूवी का, फिर भी इतना खतरा डैमेज दे रही है। Clouds high. The birds come. Wind strike. Try and stop me! You must be the boss here. Time to show you what happens when you mess with the Masters of the Nightwind! All who resist the Abyss will pay the price! Abyss, grant me new life! डैमेज नहीं पड़ रहा है क्या? Show no mercy! Ch-ch-cha! Full throttle! Surging tide! कहाँ पे गया? Fulfill our pact! You two! Time to end! Try and stop me! World ये चलो। This stronghold is neutralized. Good work. Huh! The Abyss Order's all bark and no bite. To be honest, this was anticlimactic. I was hoping for a personal apology at the very least.
And ideally, a whole speech acknowledging the superior might of the Masters of the Night Wind. Well, whatever. I'll just have to make up for it with some extra wine. With the stronghold cleared, this area should be safe for the time being. But still, maybe it's just me. But an enemy under siege normally defends their stronghold at all costs. The fighting gets more and more intense, but this time was different. With a few exceptions, most of the enemies here gave up and fled the moment that... Huh? Not sure I follow. They did a tactical retreat, that's all. It's just a I'm not convinced. Don't forget, they're radicals who chose to wage war on an entire nation. They don't do things in half measures. It seems... So you're saying there's more to this than meets the eye? I'm saying we don't know enough to be sure of anything at this stage. So let's stay alert. I'm heading back to collective. That key is our only lead so far. Paimon had a hunch you might say that, but you're right. If we can somehow use that key to track down your sibling, maybe we can end this war before things get serious. And... Wait, you're leaving? But I was still debating whether to invite you to the first victory feast. Go ahead, you two. See, Lolly and I will take care of things. ओके एक क्वेस्ट तो हो गई अपनी एक क्वेस्ट का पार्ट हो गया सॉरी ऑनलाइन पे कोई भी नहीं है Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. चलो रिक्वेस्ट स्टार्ट करते फिर से ब्रेक हो गया अपना पास में Rev the engines!
हैं यहाँ And पे. we're back where we started. That Hilichurl probably found the key nearby, right? Let's look around for clues. There's no time to waste. The Ansan and Lali are waiting for us. यहाँ पे अब क्लू ढूंढने के अपने को क्या Ugh. We've scoured the entire area, but still nothing. Are we supposed to believe that it just fell out of your brother's pocket as he passed by? Huh. Seems kind of ludicrous to lose something so important in such a dumb way. But then again, who knows? Sometimes in life, things just go missing and that's that. पायमन तो ज़्यादा ही समझदार है. Oh, thank goodness! Someone's here. Please help me. Huh? Who are you? Please, you've got to help me. I'm being chased by monsters and I can't keep running. Can you do something? Yeah, where are they? Paimon doesn't see any monster. Huh? I'm sorry, I don't quite understand. They're almost here. This really isn't the time to be joking around. हैं? We're not. We're completely serious. We don't see any mon. But how? Ugh, there's no time. They're coming. We gotta run. But I read it. What's wrong with that girl? She. Oh no! It looks like something really hit her. Maybe she was. Quick, let's see if she's okay. What's wrong? Are you hurt? What was that? The monsters! They're right there! You need to get out of here. It's too dangerous. अच्छा अभी दिख रहा है. ओके पहले वो दिख ही नहीं रहा था. Oh, now you finally see them. Great! Thank. Savior? The wind knows me. Let's light it up! No, my sword! Huh? Up! Everybody stand back! Try and stop me! भाई बस यहाँ पे चले गया मैं मेरे को कुछ दिख नहीं रहा. Pyroclastic surge! You done? Paimon still. You just looked like you were slicing at thin air. But Kinda funny, I actually. don't know what's going on either. Oh, really? Sure. It's nothing. It's okay. I can see they're all gone now. I didn't think much of it when the monsters were breathing down our necks, but now that I've calmed down... Huh? Have you never shaken hands with someone before? Well, anyway, I haven't had the chance to introduce myself yet. No worries. Paimon's Paimon, and this is the Traveler. With her around, so what was the deal with those monsters Your guess is as good as mine. I could see them the whole time, so when you said you couldn't... Whoa! That must have been scary. The idea that we'd stand by and laugh while some poor girl was being hunted down by monsters? भाई पायमन की theory खतरनाक है. Don't worry, we aren't like that. But more importantly, to the monsters. It's nothing serious. But I did sprain my ankle back there. I won't be doing any more running for a while. Good idea. We'll take it. Phew, thank you so much. Despite getting injured, I still feel much safer with you around. I'm gonna stay here until I heal up. Don't want to risk running into any more monsters. Yeah, you already took a big enough risk coming out here all on your own. So, where are you? A small village, far away from here.
I walked for what seemed like forever and lost my way, so... Yeah, maybe all these trials and tribulations are part of the journey. No. Huh. That's the second time you called the traveler a savior. What's all that about? Andrea से Oh, ठीक है ये? sorry. It just slipped out. I was caught off guard. The resemblance is so uncanny. Anyway, there was once a sage who passed through my village. People got the sense that she was truly यहाँ omniscient. पे The sage said that doomsday was coming. But as that day approached, a savior would reveal themselves to us. The day of disaster is almost upon us, so my grandmother begged me to leave the village and find the savior before it's too late. Doomsday? I've heard people talk about the savior since I was a kid. Growing up, it really made an impression on me. The description is practically etched into my mind. So when I saw your golden hair for the first time, it was like this image that's existed in my mind's eye all these years. Oh, so that's why you were lost for words when you first saw her. Well, the Traveler's definitely got what it takes to be a savior, and she's already got a ton of titles, so she won't mind one extra. Actually, I don't think it's her. What? But didn't you say that Everything except the gender. The savior was described as a young man. Oh, for goodness sake. There are gender requirements to be a savior? Oh, of course. If it's not you, then it's gotta be him. Who? Who is it? You have a brother? Well, then that's it. Oh, it's him. It has to be. Oh, thank goodness. Please, can you take me to see him? Huh. Maybe, if you're lucky. It just depends if we can find him. Huh? But isn't he your brother? Sorry. Looks like Paimon steered this conversation back to the fallout between you two. It wasn't on purpose. Okay, fair enough. But since you're looking for him anyway, why don't we team up? We might stand a better chance if we work together. Have you always believed that doomsday? Yes. Everyone says that the disaster is inevitable. But the savior will rescue us all from our pain and suffering. I've always dreamed of meeting the savior. Do you really buy this whole doomsday thing? Seems kind. See? She broke eye. Time to press her for answers. What's ये wrong, पायमन तो खतरनाक ही Something's है. clearly bothering you. You want to tell us what's going? Oh, I just, how should I put it? The traveler looks just like the savior of my dreams. And it's not every day that the savior of your dreams swoops in and saves the day in your moment of crisis. So I'm just a little overwhelmed, that's all. 3 seconds of unbroken eye contact is the limit. I don't think my mind and body can... What do you mean, limit? What happens पायमन after पूरी 30 seconds? suspicious है भाई इससे. I'm sorry. Please forget that I said anything. Like I said, I'm going to hide here until I feel well enough to move again. If you manage to find the savior in the meantime, please. Are you sure you'll be okay here? I'll be fine. I might not be much of a fighter, but I know how to stay hidden. And if I get hungry, I'm sure... All right then. Well, take care. Hang on. ये What a part भी खत्म हो mysterious रखा है. girl. We should definitely... But hey, at least she seems to like you. And it sounds like she's gonna help look for your... Anyway, this is probably all the progress we're gonna make for now. Let's head back to the... 63 की पीटीआर अपनी वेपन कब मिलेगा अपने को? अपने पास अभी पुल्स भी नहीं है कुछ. वैसे यानसन को अपग्रेड करने के लिए मटेरियल है कि नहीं अपने पास? क्या लगता है इसको अपग्रेड करने के लिए?
ज़्यादा तो नहीं है अपने पास। वेपन कूलर आर्म अटैक परसेंट का चाहिए होगा इसको कूलर आर्म। अटैक परसेंट का होता है क्या लेकिन? फिर ईआर का, ईएम का, फिजिकल डैमेज बोनस, क्या पता कौन सा लगता है इसको। आर्टिफैक्टेड कौन सा लगता है इसको? Cinder City. Okay, when a nearby party member triggers a Nightfall burst, the equipping character element uh, generates a 6 element energy. Okay, after equipping the character reaction triggers all nearby party gain a 12% element damage bonus for the element of generation. In second effect. बाप रे बाप, ज़्यादा ही बड़ा है पढ़ने को। अटैक परसेंट, अटैक परसेंट, अटैक परसेंट। ओ भाई, अटैक परसेंट और ईआर। सिंडर सिटी का 116 आर्टिफैक्ट है मेरे पास सिंडर सिटी के। अटैक परसेंट प्लस ईआर। ओ भाई, इसमें तो है भी। फायरो डैमेज तो नहीं चाहिए इसको ना, अटैक परसेंट चाहिए। इसमें भी है अपने पास। इसमें भी काफी अटैक परसेंट है अपने पास। इसको वेपन कौन सा लगता है देखने को तुमको? कौन सा सजेस्टेड वेपन है यानसन के लिए? कहाँ पे गए? अच्छा, रेडन शोगन का लगता है इसको। ओके, कैच भी लगता है। हाँ, अपग्रेड करूँ कि नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा। देखते बाद में इसको। रिक्वेस्ट लोकेशन पे चलते। Rev the engines! Oh, you're back! How did it go? Nothing substantial, unfortunately. But we had the whip. So I take it that the war's still on? No progress yet. I am or upgrade. Okay. That's okay. I just wasn't sure, because things seemed to be at a standstill while you were gone. The Abyss Order hasn't attacked us, and since we don't know what they're planning, we haven't made a move either. In a word, it's a stalemate. The guards have been keeping watch around the clock, but for everyone else, you wouldn't even know we're at war. Huh. Really makes you wonder. I was wondering, Traveler, if you have the time, could you go and pay a visit to the guards? They've been working a pretty demanding schedule. I was gonna go see them myself, but I'm sure they'd appreciate a visit from the greatest hero of our time. Oh, but you're a great hero too, Yan-san. Great.
यहाँ पे है ना गार्ड को की Wow, Tumaini, our hero. We've actually fought together before. You probably don't. You do? Then it's truly an honor to serve. Thank you for standing guard this whole time. It's all good. Honestly, it's not been that much work. Haven't heard a peep from the enemy. Nothing that would indicate an impending attack. I've spotted a bunch of Abyss Order operatives, but they weren't acting hostile. There were even moments when they seemed to be meditating. At least, that's what it looked like to me. Maybe it's out of an abundance of caution, I asked some shamans from the tribe to take a look and see if there was any, but they didn't sense anything untoward, so we just put it down to religious ceremony and left them to it. Huh. Interesting. Oh well, the more time they spend meditating, the less time they spend trying to beat us to a pulp. Well, the shamans didn't raise any concerns, so how bad could it be? As far as I'm concerned, so long as they don't pose an active threat, they can do all. Besides, as soon as everything's in place and we're ready for an all-out offensive, there'll be no match for us. Huh. Sounds like morale is pretty high. Guess there's... Huh? Is that Tumaini? What brings you here? Is this like a meet and greet? Hey, come on! You'd march to war without so much as blinking. What's so scary about a check? It's not the same thing at all. There are plenty of chances to go to war, but a one-on-one chat with our great hero? How can I not be nervous? What if I say something wrong? Or if my posture's bad? Or if I accidentally make a weird... No one's here to judge you on your posture or your facial expression. I'm sorry, great hero, but... Let Paimon guess. May I check? What? How can you be so audacious and so sheepish at the same time? Huh. No, of course not. I just figured... But I am still on patrol. So please, great Paimon... Ugh. Again with the sheepish audacity. Just... इसको बड़ा फाइट करने मैंने यार Obviously, I never expected to win, but until now, I didn't appreciate just how great the gulf was between us. I'll be bragging about the day I got to spar with Tumaini for the rest of my life. Today's really my lucky day. Ugh. काफी खुश हो गया रे Paimon can't keep up with you. Your tone has changed all over again. Now you've had a spar with the Traveler. What gives? Well, some people connect through conversation, but we warriors bond by sparring. And now that I've had a bout with the hero, we're no longer strangers. Nothing to be nervous about anymore. Okay. Well, to each their own. But Paimon's still gonna stick. Not at all. We haven't spotted any new enemy movements. ओके ओके As Paimon expected, nothing here either. Let's do another lap and get back to Yan-san. You're back. So, did the guards find anything? Nothing much, no. Someone mentioned that the Abyss Order has been doing some... Paimon wants to lodge a complaint about one of the guards, though. His name... Traveler? You're back already? And no one thought to wake me up, huh? In fairness, you look pretty hungover. Can't imagine anyone wanting to wake you... I'll have you know I'm perfectly sober when I'm hungover. Okay. What I meant to say is, I heard something about the Abyss Order engaging in meditation. Yeah, that's right. Does it mean... I sensed something strange in my dream. It was vague, but... Oh, hard to say. I don't think it had any tangible effect on the Night Kingdom or on our ley lines. It's like a signal that exists on a different dimension of reality.
It might not interfere with ours or pose any detectable risk, but I just get the sense that something strange is going on. Oh. So even someone as familiar with the ley lines as you... No wonder the shamans that Satura called to the front lines couldn't see... Ian-san, I think we should go talk to the chiefs. There's no point dragging this out. We need to take the... If that's the Council of Granny Eatsley, I'm sure the chiefs will agree. But it will still take us some time to gather in war. Adequate planning and preparation is the key to victory. Sure, but the finer details aren't my concern. Anyway, I'll leave you to it. Just remember to come find me when you're... Oh? Sure, what is it? Huh, you mean only select individuals can see them? Now that's a strange one. I guess they could be manifestations of a disturbed psyche? Or it could also be a simple case of dead monsters whose souls got stuck here somehow. Well, I say simple. Things quickly get confusing when you start looking into monster souls. For starters, trying to figure out which classification system to use is a real pain in the... Alright, we get it! Granny Eatsley's learning and wisdom knows no bounds. But... Hey, I was just thinking out loud. You really think I was just trying to flaunt my knowledge? Anyway, the short answer is... there are many potential explanations for the kind of phenomenon you describe. That said, it's not something I've ever encountered in all my years. Oh, wow. Okay. Well, if Granny Eatsley's never seen it, then... Hey, I'm not that old! मैं ग्रैनी बोलने से पूरी गुस्सा हो जाती है तो I agree hard to say. Care to elaborate on what happened? This all sounds rather mysterious. ऐसा ये स्टोरी बताते वो वुमन मिली बोल के. Really? You had to hold her hand to see the monsters? That sounds a little contrived. भाई ग्रैनी की गुस्सा हो रही लेकिन that's अभी. the part that bothers you? Maybe the point is more that it requires direct physical contact, whether that be hand-holding or otherwise. But that's neither here nor there. What bothers me is, it sounds like she's convinced that your sibling, the leader of the Abyss, that really makes me question whose side this girl is on, and whether what she told you about her background is actually the truth. Sorry if that comes across as paranoid. It's just hard not to be suspicious of everything when we're in the middle of a war. Actually, Paimon feels like you make a fair point. Whoever this girl is, she sounds like bad news. Okay, well, you're clearly just jumping to conclusions. It's hard to know what to make of it. A young lady all by herself, lost in the middle of nowhere, sees monsters that no one... At the very least, we should remain vigilant. Keep a close... Sounds sensible. On that note, Traveler, we still need some time to muster our forces. Maybe you could check on her if you're not busy. Just be careful. It's settled then. Let's go check on her. Why holding hands? Why that specifically? Why not? भाई ये तो अभी भी नाराज है I'm हाथ sure they'll show up पकड़ने से. soon. यहाँ पे अपने को वापस जाने का है. Here we are. Dear Wills. Oh, it's so quiet though. Uh-oh. What if Yan-san was right? Maybe she never intended to stay here. Traveler, watch out! Oh, sorry. I didn't know it was you. I
heard a noise. Did I hurt you? Oh, I'm so sorry. I wasn't thinking straight. Phew. That was scary. Paimon thought we'd walked into a trap. Maybe we shouldn't have sneaked in without announcing it. Then you would have known we weren't monsters. To be honest, I've been really on edge since you left. I just have this constant feeling that any second, the monsters are and it's not like I can run from them. There's also no way to cook here. It's good you got back when you did. Another hour and a half and you probably would have found me starved to death. Huh. That's weirdly precise. Wait, if you really thought you were gonna starve or get killed by monsters... I just didn't want to lose face and she already saved my life once. That's more than enough. I just don't want to come across as a constant burden. Huh. For someone on the brink of starvation, you're pretty preoccupied with your image. What? That is the real reason. I'm kind of bearing my soul here, you know? Could she really just be an injured civilian? मेरे को तो ऐसे भी लग रहा है कानेरी ऐसे आई है करके Could you make me कहाँ some से आई food है now? लेकिन सबकी ऑलमोस्ट बहुत मतलब सबकी हो गई होगी ये क्वेस्ट तो ना आर्कॉन क्वेस्ट मेरी बहुत लेट हो रही है यार Could you make me some food? Oh, Paimon's getting hungry now too. भाई पायमन तो हमेशा हंगरी रहती है क्या नई बात है कोई टाइम ऐसा है कि पायमन को भूख नहीं लगती I am so full. लेकिन अपने को अभी तक कोई लीड नहीं मिली यार उसके ब्रदर पे Guess that explains कब how you मिलेंगे had अपने the को energy पहली to make it लीड this far. ब्रदर कहाँ पे इसका I tried so स्पर्क hard to कहाँ hold पे ये back, स्पर्क but it looks भी like है I बोलते still हैं came क्वेस्ट में across ना like a total glutton. पता नहीं कब आएगी तो स्पर्क Paimon didn't even realize how late it is. Hey, Yeah, and it's all thanks to you both that I'm able to relax. I was cooped up in that cave the whole time you were gone. Now, you weren't in there that long. when I was young, I used to lie on the roof of my house. And often, my mind would drift to this question. Wait, why would she think that? Does she know about the false sky? Huh? But my False grandma sky? would tell me, the answer तो to मेरे that को भी नहीं question पता doesn't really matter. Think of all the people in our village who spend their entire lives here, she'd say. To them, that little village is their whole world. And so, if it's our destiny to live beneath this sky all our lives, then whatever may or may not lie beyond, this is our world. And that sky is real to us. Paimon kinda gets you, but also not really. Is it kind of like how journeying with the traveler is everything to Paimon right now? I really treasured my world. The village was my everything. The houses, the scenery, stories I always loved to hear about the Savior. But I could never bring myself to agree with Grandma. Even if the village was my entire world, I still had to know what lay outside its borders. Yeah, go you! So, I finally ventured out and set off on my journey to find the Savior. I'm going to make my world bigger, one step at a time. And I'm not going to stop until I've seen what's beyond. Maybe then, I'll finally get an answer to the question I had. Who knows? Maybe one day, I'll be sitting and Yeah, one day. Oh, if only we could tell her. But I need to find the Savior and protect my world. That's the most worthwhile thing I could think of doing. So I've been giving it everything I've got. you know what? That's pretty cool. Paimon Sorry. I got a little carried away. I always get chatty. Hold on. Shh. It's them. The monsters are back. Where? Oh, still invisible, huh? Can you see them now?
ओ भाई खतरनाक। Paimon still can't see anything. Into the wind. Full throttle! Incinerate! Teamwork is dreamwork! As one with wind and cloud. Wind strike. Rev the engines! Wrath from the sky! काट गए। और भी है क्या वो? No, my sword! Witness the power of Gugwa! Everybody stand back! Huh? Wow, that was fast. Did you get all? Oh, Paimon's slowly but surely getting used to the sight of you fighting thin air. You doing all right, Deirdith? Deirdith. Deirdith? Hey, it's okay. Oh, I'm fine. I just spaced out there for a moment. You spaced out? I was just... the image of the traveler fighting to... All right. Whatever floats your boat. भाई पाइमॉन की Anyway, थाट अलग ही there are no दुनिया more की। monsters in the area, and it's getting late. Sounds reasonable to Paimon. What do you think? All right. Deirdith will be... Huh? Deirdith? What? As you stare, कैंपर के फिर ड्रीम में अपन अभी वो भाई ड्रीम में सीधा ब्रदर मिल गया इसको खतरनाक। Doomsday. A fitting name indeed. इसकी आवाज है ये। A blood-red sky. Wild beasts that slaughter all in sight. Endless pain. A terrible curse that cannot be reversed. And the birth of a savior. You're awake! I'm sorry. I didn't mean to, You just look quite distressed, like you were having a nightmare. I thought if I took your hand into mine, you might find it, but it didn't seem to work on you. In fact, I think I made it even worse. Oh. You better not be trying to pull a fast one on the traveler. ओ भाई What? Don't be पाइमॉन so... गुस्सा हो गया। I have more self-control than that. Self-control? What does that have to do with it? No, you go ahead. But for the rest of the night, Oh. ये पाइमॉन तो पूरा डाउट दे रहा है ये लेडी पे। Well, Deirdith, there should be enough food for 3 days.
Make sure you eat the perishable stuff first, so nothing... Yeah, I can tell from the ingredients. Thank you so much. For 3 days will definitely be enough time for my ankle to heal. Then... Alright, then we'll be off. Bye for now, Deirdre. See you? Wait! But if this is goodbye, how am I supposed to find you again? Oh, I mean, what if I find your sibling? Ah, that's a good point. We share the same goal, but we're constantly on the road, so we've got no fixed address. How about this? When the time comes, you can just write a letter to Mawika. She'll be able to find us for sure. Mawika? Who's Mawika? Well, I think I see something over there. It's the Abyss Order! They're here! But it doesn't look like they're marching to war. More like they're... Where? What are you talking about? a bunch of Abyss Order thugs! You don't see them? They're heading right this way! That's strange. I guess it's my turn to not be able to see the monsters. You're right! I see them now. You weren't joking after all. So this is... What a weird situation. What is making these monsters invisible? Is it Deirdre? Or the monster? Well, might as well mow these ones down, just so they can't pose a Woohoo! All done! Their morale seems super low. Guess they really were on the run. So, there's no more of them, right? I still can't wrap my mind around this. Why couldn't I see them until you took my hand? So, any ideas on why those monsters might have been running away? Oh, Paimon's getting a little worried about Ia. We gotta go. Bye for... See ya, and please take care. ओके ये तो हो गया वंडर ऑफ ऑनलाइन है यार मैं अपना प्राइमस कैसे कलेक्ट करूं प्राइमस के लिए कहाँ फार्म कर सकते हैं अभी आज को रिसेट होगा नहीं कल को इसका फार्म कर सकते हैं अपन इससे 2 या 3 फूड ले सकते हैं ये बेटर ऑप्शन होगा और क्या एक्सप्लोर करने बाकी है ये 62 45 नटलन तो काफी एक्सप्लोर करना होगा कि फिर एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा फार्म के लिए तो Instead of confining themselves to the head. We ran into quite a big group from the Abyss Order just now. Has... The front line has collapsed. Huh? But... how? No, relax. Their front line has collapsed, not our... Feels like you could have phrased that more clearly at the start. But this is good news, right? Why'd you still look so serious? No, we're still mustering troops. Nowhere near ready to go on the offensive. V bhai hello welcome confused about what exactly new happened stream out new there. XP But just now, I got the full story from a guard who was on the scene. अभी तो नंबर 2 पे होंगे V भाई लेकिन जल्दी नंबर 1 हो जाएंगे श्योर है One person, just a V single भाई individual. XP गेन करने में They एक्सपर्ट stormed है the enemy lines and attacked with a vengeance, cutting them down like paper dolls. They wielded an unknown power and fought with a sword style that no one recognized.
The guard who relayed this to me said that before he even had time to react, the enemy was. ये I'm only कौन है? recounting what I नया heard. person. And I'm sure the guard in question must be exaggerating to some extent. But still, we have to identify this person. And assuming they're a neutral party, we'll need to figure out how to engage with them. Clearly, they're a force to be reckoned with, so we don't want to come across as too weak or too hostile. कौन You don't है need to कौन sweat ये it, mysterious Leon-san. person? From your description, we're already pretty confident that we know this person. हैं? कौन Honestly, होगा? with the Abyss Order acting out so publicly, it's about time he अच्छा वो Dainsleif. डेंसलिफ अच्छा अच्छा हाँ वो ब्लू वाला ना जो मॉन्स्टर्ड में उसकी क्वेस्ट थी वो भाई वो यहाँ पे भी शो अप हुआ है क्या खतरनाक पास में ही है ओके स्कर्क है ना ये क्वेस्ट में भी भाई वैसे स्कर्क मैंने सुना है कि ये क्वेस्ट में स्कर्क है बोल के It's been a भाई while, वही है Dane. And yeah, after we heard what went down, we figured you'd shown up. You caused quite a stir, you know. Oh, this is a friend of ours from Natlan. Her name's Ian-san. She insists. It is my honor, Mr. Dainsleif. Thank you for breaking the stalemate in our war against the Abyss Order. Natlan is fortunate to share a common enemy with such a mighty warrior as yourself. Please don't mind him, Ian-san. He always talks like that, but he's a pretty nice guy deep down. It's quite all right. Uezo Janssen respects those of great power. It's quite clear that he meant no offense, and I am still delighted to make his ये कौन acquaintance. सा वाला स्टोरी आर्कॉन Anyway, क्वेस्ट है नहीं since तुमने you're old किया नहीं friends, क्या यार I'll आर्कॉन leave you to क्वेस्ट catch up for now. Take your time. क्या बात कर रहे हो यार तुम आर्कॉन Sure क्वेस्ट thing. को पहचान You नहीं probably रहे have भी भाई plenty of other stuff ऐसा to do कैसे हो anyway, गया right? Since this war isn't exactly over. See you. Hey, Dane. Would it have killed you to be a little more polite? She's our friend. Fine, since you helped break the stalemate, we will let you off the. Ugh, so stubborn. Whatever. So anyway, Dane, do you have any new info about the Abyss Order for us? अच्छा इसका साउंड ही नहीं है यार भाई ये लोग साउंड आर्टिस्ट क्यों नहीं ढूंढते जल्दी क्या पता कहाँ इतने पैसे We thought उड़ाते so तो too. But it एक sounds तो like साउंड you're आर्टिस्ट closer मिलने to को बोला learning what इन्होंने that यार goal इतने सारे is than साउंड we आर्टिस्ट are. हो गए अफोर्ड नहीं करते भाई ये लोग What do you think we should do? होशियार है भाई बंदा एनिमी को खत्म कर दो बोल Paimon के gets डायरेक्ट it. Nothing in the world can satisfy you like making mincemeat out of the Abyss Order. Wow. Okay. वैसे इसकी क्या स्टोरी है रे ये अबिस ऑर्डर के लिए मतलब अबिस ऑर्डर से फाइट क्यों करते रहते हैं वी भाई क्या सीन है इसका Well, actually, we found her brother's hibernation chamber key near the... Oh, and there's more! After finding the key, we also ran into this weird girl. She kept seeing monsters that we couldn't see. ये ऐसे and काम this other time, चला रहे we हैं saw a अब load of monsters, but
She भाई हो couldn't. सकता है यार ये सच्ची She में also said she was on a journey to एआई का यूज find कर the रहे होंगे अभी तो savior. बेकार कर दिया Her पूरा description of गेंशिन this गेम प्ले savior एंड matched स्टोरी the traveler pretty closely, so we ओ भाई figured सही it's में probably her brother. एआई तो वही स्टोरी लिखेगा यार कुछ नया आइडिया नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं अगर खुद से डेवलप करते कुछ तो बढ़िया होता Yeah, that's तुम right. बोल रहे एआई से तो फिर Is तो something the बोरिंग matter होने again? वाला है आगे और भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा फिर तो ऐसे मैं तो स्किप करने वाला हूँ अरे मेरे को सुनना था ये मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी ये क्वेस्ट तो इसलिए मैं सुन रहा क्या बोल रहे हो किसी लोअर Wait, एडिक्ट से wasn't her पूछो brother called the prince, though? हाँ वो भी बोला पूछना पड़ेगा किससे पैरा बॉय सुनते रहता पैरा बॉय याद है कि नहीं तुमको उसको पूछना पड़ेगा यार दे मेड इट साउंड हिम देयर दे पेन क्या बोल रहा भाई इतना बड़ा इसका साउंड नहीं है तो यार ये इतना पढ़ना जान पे आता है साउंड होना चाहिए था Huh. Sounds like the people of Conria really believe. अच्छा मेरे को लगा ही वो कांट्रिया से करके Ah, Paimon gets it now. So, a bit like Kaya. Except she grew up somewhere more isolated? ओ Still, ऐसा है वो that doesn't explain the invisible monster situation. Sure. Also, why don't you stay with us at the... कांट्रिया से है वो लड़की मेरे को लगा ही था वो ऐसा है करके 8 बजे तक के रुकने का है ना अपने को टाइम फॉरवर्ड कर देते हाँ फार्म अपना इसका ये एक्सप्लोरेशन बोल रहे क्या अभी तो क्वेस्ट कर रहा था मैं फार्म भी करने का है वैसे तो थोड़ा बहुत कर लेता मैं क्वेस्ट कंप्लीट फिर अपन करते तुम आते क्या वर्ल्ड में लेकिन ऐसा वर्ल्ड क्वेस्ट होती क्या दोनों साथ में वेपन के लिए तो फार्म करने का है यार मेरे को 63 की पीटी है मेरी फार्म कुछ भी नहीं है एक भी पुल नहीं है अभी तो मेरे पास कल को अभी से रिसेट हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा मतलब आज रात Aiden में and हो जाएगा Ayaan ना वो sound discussing strategy together? बढ़िया हो जाएगा फार्म के लिए Looks like दो they're या getting along 3 just पुल तो fine. हो जाएगी शायद उससे या 2 ही होएगी शायद शायद फिर भी अच्छा है 65 पीटी Morning! What are you guys talking about? भाई You're वेपन की here. पीटी भी I have मेरी some इतनी good हाई news जा to रही share क्या with you. बोलूं We just got word from the scions of the वर्ल्ड canopy. के साथ में नहीं Their होती क्या वो intelligence has reported that यानी they've अपन बस discovered the पजल Abyss कर Order's सकते साथ headquarters में in Natlan. After their front lines dissolved, the bulk of their forces fell back to that area. It's also where their central command is located. The location? The Cinder City. Cinder City, huh? That tracks. Seems like their kind of place. Hey, this is great! This could be our chance to crush the Abyss or... And with any luck, सिंडर maybe सिटी we'll find your आर्टिफैक्ट के brother नाम there, से too. एरिया भी Yep, बनाई है our क्या army इन्होंने is almost क्या ready. एरिया के नाम And से we've sent a आर्टिफैक्ट message बनाया to है सर Malika to let her know the plan. We can't really launch an हमारी operation this 47 की big without पीटी the okay from the ओ भाई Archon. काय पे वेपन बैनर पे क्या कौन सा वेपन ले रहे तुम I've already explained my reasoning, Mr. Dainsleif.
I understand your concern, but an immediate strike is You're gonna go on your own? Come on, be sensible. Just... It's all right. Huh? Shouldn't you be... I admire his courage, and I believe he is strong enough to and even if things don't go to plan, he just needs to bide his time until we arrive with Mr. Dainsleif, I wish you the very best of luck. Looks like he's waiting for you to say something, Traveler. Oh, for a second there, Paimon actually thought he was gonna brave it alone. अच्छा इसके साथ में जा रहे हो अभी अपन कहाँ पे लेकिन ये ओ भाई यहाँ पे यहाँ से शायद फिर कुछ अनलॉक हो सकते हैं एक्सप्लोर भी हो जाएगा तो बढ़िया है वी भाई आया मैं 2 मिनट में वापस Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. हेलो हेलो आवाज आ रहा क्या आ गया मैं वापस चलो वापस जाने का अभी अच्छा यहाँ में फाइट है अपनी अभी ओके Is this the place? The Abyss Order's hideout in Natlan? मैं भी इवेंट कर रहा हूँ ओके अरे मेरा मैसेज कभी कभी लोड नहीं होता है रवि भाई रुको तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ मैसेज की दिक्कत हो रही है कुछ तो भी देखना पड़ेगा यार मैसेज के लिए डिले भी होते हैं कुछ कुछ है क्या देखना पड़ेगा सेटिंग कर सकते क्या तो ठीक है इन दिस बैटल Densleif will show you the might of the Twilight Sword. Summon him to clear out the
obstructions that bar your path. ओके ऐसा है वो। क्या पार्टी सेटअप ये रहने दो ना। और तो कोई काम का ही नहीं है मेरे इसमें, क्या टीम दूं मैं? या एटो की टीम से खेलूं? जाने तो यही रहने देता। मैं अपने अकाउंट में नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तो Exploration and किसके अकाउंट पे हो trials. लेकिन? सेटअप क्या बोल रहे हैं? Venturing is हो right गया up भाई। my alley. हो गया अपना सेटअप, चलो। The wind knows me. Rain outlines your fate. Huh? Full throttle! इसको ओपन करने से क्या होता? हो रहा ही नहीं है। तो भाई ऐसे करते हैं उसकी, बढ़िया है तो। Teamwork is dreamwork! अरे क्या हो रहा है? Let's ride. अल्ट को चली जा रही है यार अपनी। Incinerate! तो भाई खतरनाक डैमेज दे रहा है ये। That's gonna hurt in the morning. No, my sword! Light up the blazing sun. How brightly burns the truth! Incinerate. डेंस गिफ्ट को बुलाते हैं, मारो उसको। अरे बढ़िया, This is खतरनाक a भाई। very वन different शॉट ही battle कर रहा है ये than तो we fought सबको। with the Yansan. No one's backing down. They're fighting back with everything they have. मेरा तो डैमेज ही नहीं कट रहा है। Behold, Everybody stand back! has come. I'm going in! क्या हो रहा है ये? Peace be with रोटेशन तो मैं पूरा रैंडम कर रहा था। Rev the engine. gifts of grace. Abyssal light shine. ये वन शॉट मार देता, इसको बुला लेते। तो भाई बच गए। The truth, I can no longer hold back. the power of revelation. डेंस गिफ्ट को बुलाना पड़ेगा तो शील्ड तोड़ने Teamwork को। is dreamwork! You free. Clouds high. The birds call. Wind striker. Is opened unto you. बढ़िया मारता है डेंस गिफ्ट। काफी हेल्प हो रही भाई इससे। हील चाहिए अपने। सभी कैरेक्टर हील होते हैं ना सही से। Let's light it up! Rain outlines your fate. Pyroclastic surge. Everybody stand back! Witness the power of Gugwa! Know my sword! भाई ये कहाँ के काफी भक्ति मूवी है। मूवी का कंट्रोल करना मुश्किल है मेरे लिए। यूआईडी देना अपना। यूआईडी है 891173 474। रुको मैं चैट पे डाल देता। शॉर्ट्स के इस पे डाल रहा मैं। हाँ, शॉर्ट के इस पे देखना 891173 474।
शॉर्ट्स के इस पे डाले हुआ है मैंने, वहाँ पे देखना यूआईडी। यहाँ पे डेंसली को बुलाता हूँ, आजा। Rain outlines your fate. As one with wind and cloud. Teamwork is dreamwork. Light of the blazing sun. Days. The relentless specter that haunts us. The abyss is all present. To flee is futile. To resist it, vain. ये तो पूरा पानी पे ही है। Everybody stand back. Body and mind. Shall rise. Clouds high. कर गया Birds call. Full throttle. Foolish mortals. डेंसली आने से डायरेक्ट शील्ड के सहित मार देता इसको। है आ नहीं रही, क्या बात कर रहे हो? आनी तो चाहिए यार, कैसे कैसे आ नहीं रही? 8911734474 सही तो दिया यार मैंने, यही आईडी है। अच्छा हाँ बराबर है बराबर है। हाँ मैं ये Instead of confining आर्कॉन themselves क्वेस्ट to में the हूँ ना मेन। heavens, God should बराबर broaden है their अभी भाई, horizons in the अभी world सही below. गेस करे यार तुमने, इसीलिए ऐसे दिक्कत आ रही है वो। Stop me. ये कौन है? रुको इतनी क्वेस्ट होने दो, उसके बाद हो जाएगा, आ जाएगी फिर एक्सेप्ट करता हूँ। So where's the traveler's brother then? Or is this guy supposed to be in charge? So, this is a hunt to you. I must say I pity you, Dainsleth. The death you dole out so readily to others is a luxury you yourself can. But today, that is the least of your worries. ये immortal है ना शायद? Do you realize that all your Densely years of pursuing us are being rendered utterly meaningless, even as we speak? Then allow me to be frank. As far as we are concerned, ओ भाई प्रिंस our जीत भी prince गया is बोलता already इसका won भाई। by other means. And I do not merely mean this battle. नो आइडिया। His वी भाई Highness has बिल्कुल भी achieved स्टोरी देखते नहीं something लगता यार तुम। far तुम तो मेरे से greater. भी खतरनाक निकले यार वी भाई। For today, the Abyss Order's greatest wish has finally been fulfilled. हाँ भाई ऐसी क्या विश है यार? Our Highness quietly infiltrated the Night Kingdom to exploit that realm's past and then used the loom of fate to reweave the ley lines of Conria. What? क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। Wait. Does this mean the attack on the Masters of the Night Wind was all a smoke? Oh no! Correct. And all of my Aye. comrades that you have slain, Dainslith, they shall forget the struggles that have beset them these past 500 years and begin their lives. भाई मेरे को इसकी आधी स्टोरी समझ में आती और आधी समझ में नहीं आती, इतनी कंफ्यूजिंग है। कुछ पार्ट समझ में आता कुछ नहीं आता। अब ये कांड्रिया का वगैरह जो भी इतना डिटेल में बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आया। Right. You still need a few steps after that, such as finding a place to host the ley lines you just re-wove. Plus, if it was really so easy, Malika and the captain would have had a way easier time during the war. Oh, you poor fools. Clinging to delusions, even after. Think back on the past few days. Have you truly not noticed anything amiss since the start of the war? हाय क्या मिस कर दिया वे अपन? Are there signs that I could have missed?
I sensed something strange in my dream. It was vague, but it seemed as if some noise had found its way into Natlan's ley lines. Oh, what does that हाँ mean? चिकलाली ने ये तो बोला था यार Hard to अपने को say. बराबर है. I don't think it had any tangible effect on the Night King. It's like a signal that exists on a different dimension of reality. It might not interfere with ours or pose any detectable risk, but I just get the sense that something strange is going on. हैं? क्या साइन थे और which of these events is proof that कांड्रिया has been revived? कांड्रिया कैसे क्या रिवाइव कर लिया भाई इन्होंने? क्या मालूम क्या ले लाइन का क्या सीन है तो मेरे को समझ में नहीं आया. हाँ ये लग रहा है मेरे को. अच्छा ऐसे है ही वो ऐसा सीन है यार वो. अब भी समझ रहा मैं. ये तो बिलीव ही नहीं कर रहा भाई. ये तो खतरनाक ही बंदा निकला. इसको डिफीट करना है अभी. मारो मारो. Give in to the embrace of the abyss. Wind strike. Witness the power of the wild. ये पायरो शील्ड दिक्कत है रे. मुझे अपना सब पायरो ही कैरेक्टर है. You battle in vain. The abyss order's mission. जल्दी मर रहा है यार. फिर एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी मर रहा है. तो लगा पूरा टाइम लगता. My body is failing. But I will not bring shame to the name of the abyss. अरे फिर से शील्ड लगा लिया है. Rain cutter. I'm going in! You battle in vain. Pyroclastic surge. The abyss order's mission has been. So, are you still thinking about what that guy said? You look really worried. क्या बोल रहे हो भाई? मारो मारो. अभी तो लंबा स्टोरी है. तुम्हें कैसे पता यार? तुम तो स्टोरी पे ध्यान नहीं दे रहे बोलते. फिर कैसे पता भी है भाई तुमको? हैं? उसको कौन मार दिया बे? वो तो मर गया था ना. ऐसे कैसे हो गया ये? वो ये मरता ही नहीं. ओ द कर्सर में. अरे ये मरता ही नहीं. वही तो बोला था मैं यार इमॉर्टल है करके. देखो प्रूव हो गया यार इमॉर्टल है. Address me as master. Don't forget, Dainsleif. You may be the renowned Twilight Sword, while my arm has grown, but I taught you everything you know. Be that as it may, under the circumstances, I see no further reason for us to fight. The curse of immortality means neither of us has a way to completely स्पीक फॉर योरसेल्फ बोलता. भाई खतरनाक है ये बंदा. पूरा खुन्नस में रहता है ये कांड्रिया की लोगों को मारने को. मॉन्स्टर्स को बोल सकते वैसे तो. Have you finally had enough? Never, in all my worst nightmares, have
have I experienced anything close to the pain of 100 deaths. Still, aren't you at least a little tired? What? Not a fan of reminiscing about old times? Indeed. When the cataclysm first struck, everyone prayed for the Savior to deliver them. But he... Yes. We knew that the great abyssal power within him, yet we still despaired at his choice. Still, I believe that everything he's doing now, including his regret... And besides, who else can we place our faith in? We are proud Conrians, are we not? I mean... Oh, I'm sorry, Dainsleif. I would apologize to you for those actions. I honestly can't remember that many. Look at me. Look at what has become of me. Only by the Abyss's grace have I managed. But as for the rest, memories, even if mine was a past steeped in sin or in shame I once longed to hide, without my history, I fear I will become another person entirely. I would like to apologize for any misdeeds that are mine. So please, tell me everything. Tell me about the Conria we once called a home. You seem to remember much. Could you tell me more about it? About our golden age? Is that so? ये कितने बातें कर रही है? What a pity. But this will be quite sufficient, as long as the loom of fate heard what I could not. I'm afraid the homeland hasn't yet been revived. Think of ley lines as the collection of memories concerning a given place. To reweave Conria's ley lines as they were 500 years ago, we would somehow need to retrieve almost all the memories of Conria from that age. The loom of fate cannot weave without an abundant supply of memories. And so, we relied on everyone in the Abyss Order to provide what they could, even though fragments are all that remain in most cases. The more we all share, the more that can be restored. वह कितने बड़बड़ कर रही है? Indeed. We, a people in exile, stranded 500 years in the future, will weave our homeland anew and bring the nation of our dreams back into the real world. What a shame it had to take this long. After 500 years.
Precisely. For you possess a ring left to you by your elder brother, which continuously resets your body's condition. Of course, your memories are susceptible to erosion just like ours. But of all Conrians who remain, you are sure to remember the most. We had to obtain the memories in your mind, whatever the price. Even if it meant sacrificing our entire army as... सच्ची में काफी लंबा जा रहा है स्टोरी तो। इसको थोड़ा अभी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अपन, क्योंकि यहाँ का स्टोरी मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है वैसे भी। हो गया ना अपना भी। रिक्वेस्ट आई नहीं यार तुम्हारी अभी तक तो? अभी भी शायद नहीं आती लगता है क्वेस्ट के बीच में। क्वेस्ट खत्म होने तक के आएंगी नहीं क्या? इसको बात कर लेते अपन, देखते क्या है। खत्म कर लेते। She's still here. क्या दिख रहा है इसको? स्टोरी है भी खतरनाक। ओके ओ भाई भाई भाई, डेंजर भी खतरनाक स्टोरी है। क्या हो रहा है? We're not from... Wait, but that's great! That means the world isn't going to end. In that case, tell me, what happens to Conria? What happens to my homeland? No, wait. Don't answer that. We can only fight for our future. If the future is unknown, I still believe the Savior can turn things around. I'll carry on looking for him. Even if you're not there to protect me. Although... I've already found my savior. It's you. You protected me. And I believe you can protect... It's just... too bad अरे that यार we're ये not from the same time. नहीं देखा जाएगा or place. मुझसे। स्टोरी बोर हो गई लगता है भाई। One last thing before I forget. समझ I know how सकता much you want to find your कोई। brother. Surely he must be desperate to find you too. कोई ऐसा होता है जिसको बिल्कुल भी स्टोरी नहीं पसंद। So, मेरे को भी वर्ल्ड Is क्वेस्ट there की anything बिल्कुल you भी can स्टोरी give me नहीं as a पसंद। memento? Proof that we रेयरली met? देखता हूँ मैं भी That कोई way, स्टोरी, when I पर do ये find थोड़ी him, इंटरेस्टिंग लगी I can इसलिए मैं convince देख him रहा that you're था। also searching for him. थोड़ा मेरे को जानने मैंने कांड्रिया के बारे में और इसके भाई के बारे में क्या हो रहा है एक्चुअली तो। Huh? What is it? ये क्यों हंस रही? इसको क्या पता चला? हैं? क्या दे देते? ये क्या हो रहा है?
अभी एंड देखना तब समझ आएगा, मत देना कि अरे लेट बोल दिया यार तुमने, मैंने दे दी कि उसको। क्या यार तुमने बताया नहीं यार मेरे को टाइम पे। पहले ही बोल देते यार तुम। क्या यार। There's no other way that this meeting could have taken place. मत देना कि मत देना। ओ भाई लेट बोले यार वी भाई तुमने। मेरे को थोड़ी पता था यार, मेरे को लगा उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा इसलिए मैंने की दे दी उसको। मैंने सोचा ही नहीं ऐसा क्या होगा तो। क्या बोल रहे हैं? Has Candria really been revived? अच्छा ऐसे हो। भाई क्या हो गया ये? स्टोरी लग गई।
हो गई लगता स्टोरी। Our hero is back. Everyone's been waiting for वे you. फाइनली The Abyss आवाज आ Order गया। made a full retreat before our forces even arrived on the scene. What? Paimon doesn't know the details either. The traveler just disappeared after taking Deirdre's hand. It was like Paimon was looking all over for her, and then she suddenly reappeared, right back in the same spot. I think I got the gist of what happened. Something to do with... Huh? You met your brother? And you didn't think to tell Paimon right away? पाइमॉन गुस्सा हो गया। Never mind. What your brother accomplished? It all but defies comprehension. But what surprised me the most was that the Lord of the Night actually chose to allow it. The Lord of the Night did try to explain it to me, but during the war with the Abyss, Mawika had an argument with the captain. Mawika believed that we should fight to protect our culture and memories, while the captain believed the preservation. So, the Lord of the Night was very intrigued when presented with the Loom of Fate, and informed of its ability to weave ley lines. She saw your brother's actions as a potential third option, namely to preserve it. Preserve a nation? You're not the only one. With that in mind, the Lord of the Night gave the go-ahead once she was satisfied that the Loom of Fate wouldn't have any real effect on Natlan. However, I believe she imposed an additional condition of her own. An additional condition? Did she ask? No idea. She wouldn't... Huh. Alright, well, let's not overthink this for now. We just won a war! I trust the Lord of the Night unreservedly. I'm sure she only involved her. Don't you agree, Traveler? Come on, let's head back to the Collective of Plenty. Oh, Veressa should be there too. We'll treat you to a real feast. Where is that? Huh? इसको क्या हो गया अभी? Eon-san, leave. This might be hard to understand for an extrovert like you, but some people... Traveler? ओ भाई खत्म होती नहीं है। Full throttle! Try and stop me! यहाँ पे खत्म होगी लगता है क्वेस्ट। हो गई बढ़िया। डायमंड्स भी मिल गए। अरे ये भी मिल गया।
स्कर्ट तो नहीं थी इसमें। मेरे को कौन बोला था यार स्कर्ट है करके। चलो भाई पुल करते, 2 पुल से अपने पास 64 पे तो नहीं मिल रहा। 65 पे मिलेगा क्या? 65 पे मिल गया भाई, मोनिका का वेपन आ गया। अरे बढ़िया। ओ भाई मोनिका का वेपन आ गया भाई, जबरदस्त। अब होगा डैमेज भाई, अब आएगा मजा। ये हुई ना बात यार, ऐसा लक चलने को ना यार, मजा आ गया भाई। मोनिका का वेपन आ गया, यही तो चाहिए था यार। कब से इसके लिए वेट कर रहा था मैं भाई। खतरनाक, जबरदस्त। आज का लग अच्छा था यार। अब मूवी का होगी मेरी कंप्लीट। अभी टीम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं मूवी का की टीम इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा वेपन ही नहीं था यार उसका। अब वेपन नहीं होने से साला बनाने मन नहीं करता। वो ऐसे फिर स्ट्रांग लगती नहीं उतनी जितनी वो होनी चाहिए। अभी अपन देते इसके वेपन को अपग्रेड। अभी ये रेशियो 43:201। इसके वेपन के बाद इसका रेशियो खतरनाक हो जाएगा भाई। बढ़िया। एंडिंग समझ आई? नहीं, एंडिंग समझ तो नहीं आई भाई भी भाई मैं देखा तो था। अरे ये तुम है क्या? इट- मैं कॉपी नहीं आ पा रहा लेकिन। अरे मूवी का हो गया अभी यार, यही तुम ही है ना? रुको, मैं मेरे को भाई मोबिका का वेपन मिल गया यार, थोड़ा अपग्रेड करने दो मोबिका को लगाने भी दो भाई। अपग्रेड करते अपन। इतना वेट किया यार मैं इसका, क्या बोलूं भाई, बहुत काम किया मैंने इसके लिए। Exploration and trials. मजा आ गया Adventuring is लेकिन। right up my alley. होपफुली इसके सामान कुछ हो अपने पास अपग्रेड के लिए। अरे यार है ही नहीं अपने पास, ये क्या है ये? डोमेन नॉट येट अवेलेबल है। मंडे को तो मतलब, आज मंडे नहीं है कल। अरे यार अपने को इसका फार्म ही नहीं कर सकेंगे अपन नहीं। थर्सडे को आएगा Instead of भाई ये confining सीधा। themselves to the heavens, आज God तो should सिर्फ broaden their ट्यूसडे, horizons in the world below. यानी सीधा मैं भाई वेपन। क्या यार किस्मत हट। मैं सोच रहा था आज वेपन यूज करूंगा करके, कल ही इसका ये आके गया। किस्मत खराब है मेरी। लगता है आज के लिए लगा नहीं सकते अपन इसका वेपन। वेपन दिखाना मूवी का कौन सा है तुम पे? ओ तुम पे भी है क्या? अरे होए मैं तो अभी लगा नहीं सकता यार। क्या रेशियो क्या है तुम्हारा, देख सकता है क्या मेरे को? 1 मिनट चेक करने दो मेरे को। कहाँ से देख सकते अपन? मूवी का है अपन पैड। किसकी आईडी से खेल रही है? क्रिट रेट सिर्फ 11 बढ़ता है इससे, इतना कम क्रिट रेट है इसका। Exploration and trials. क्या है रेशियो? Adventuring is 44 right ओवर up my टू alley. 29। ओ भाई अटैक परसेंट कम हो जाता है ना इसमें। सैंड्स ईएम का सैंड्स लगता है इसको, मोविका को। इसका क्रिट रेट भी नहीं निकला है ना गॉबलेट के। क्रिट डैमेज इसमें भी, ये सर्कुलेट भी खराब है इसका, इतना अच्छा नहीं है। फ्लावर अच्छा है, फेदर भी अच्छा Instead of है। confining themselves to the heavens, ये ईएम क्यों God लगाया should रहा है broaden इसके? their horizons in the world below.
न्यूक के लिए ईएम है, अच्छा। हाँ इवेंट तो कर लिया मैं। अच्छा न्यूक डैमेज के लिए ईएम अच्छा Exploration होता and है, ओके। trials. और Adventuring अगर ई is स्किल right up यूज my करने का alley. अपने को तो फिर अटैक परसेंट ठीक रहेगा। हाँ एक्सप्लोर कैसे करते अपन? अगर अपने को, अरे हाँ इनाजुमा का, रुको मेरे को इनाजुमा पे चलते अपन। मेरे को इनाजुमा का एक पजल है इधर में है शायद। वो पजल मेरे को करने में हेल्प करो तो थोड़ी। Many insects यहाँ have a पे है क्या शायद compulsion वो? to follow the light. रुको मेरे को चेक करने दो। नहीं इधर में वो, इधर में आओ इनाजुमा पे मेरे साथ। अपन करते एक पजल। अभी तो भाई पूरा सेव करूंगा मैं, अभी शीतलाली के लिए पूरा सेव। अरे यहाँ पे ही तो थे यार वो पजल, कहाँ पे गए वो? है यहाँ पे ही तो था वो। मेरे को देखने दो तो। Hip. Hup. Hip. ये वाला कैसे करते बताना तो मेरे को। ये मेरे को समझा नहीं, ये स्टार कलेक्ट कैसे करूँ मैं? वो ऊपर में वो दिखा क्या तुमको? अरे भाई मेरे को भी नहीं पता, मैं वही तो नहीं था। ये 2 साल पहले किया था भाई। कैसे करूँ मैं ये, कहाँ कैसे सर्च करूँ ये? इतना ऊपर में यार वो स्टार कहाँ से कैसे करते, मेरे को कोई कुछ बता दो भाई। Rev the engines. चांस ही नहीं है भाई ऊपर जाने का। भाई ये स्टार मैं ले ही नहीं पा रहा, ये स्टार के लिए मेरा इनाजुमा का सब रह जा रहा है भैया। कैसे लूंगा मैं ये स्टार, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अगर सर्च करना रहा तो कहाँ पे कर सकते हैं सर्च ऐसा? और एक पजल है, मेरे साथ आओ तो नीचे में है वो। कौन सी साइट है वो एग्जैक्टली वो नहीं याद मेरे को, लेकिन नीचे में है वो। ये इधर है शायद वो। मेरे साथ है ना, मेरे साथ। Rev the engines. यहाँ पे नहीं दिख रहा हूँ ऊपर पे। यहाँ पे नहीं है यार वो। Full throttle. एक मेरे को एक मैकेनिज्म जानना था मेरे को, वो मैकेनिज्म मेरे को समझा ही नहीं भाई। वो कैसे करते थे?
यार वो दिख नहीं रहा है यार अभी। कैसे करूँ मैं? यहाँ पे जाके अपन फिर से चेक करते एक बार। वो दिख नहीं रहा अभी भाई। तुम सुन रहे क्या मेरे को इस पे? स्ट्रीम पे सुन रहे क्या? Light it up! एक जो पजल है ना, मतलब एक मैकेनिज्म, वो मेरे को समझा ही नहीं कैसा है। तो वो मैकेनिज्म लेकिन दिख ही नहीं रहा है यार कहाँ पे। तो यहाँ पे होगा शायद, उस शायद से। यहाँ पे भी नहीं है वो। जाने तो वीकली बॉस ही कर लेते। आ जाओ मूवी का पे जाते। लेकिन अपने दोनों से होगा क्या? क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं मेरे पास टीम। डोमेन ट्रांस। बेनेत रखता हूँ मैं। बेनेत के साथ में क्या लूँ लेकिन? डियोना चलती है क्या Exploration इसको? and trials. Adventuring is right up my alley. ये क्या लूँ और नहीं तो? शील्ड। शील्ड शील्ड। सब डीपीएस ले लूँ क्या मैं? सांगलिंग ले लूँ? ओ भाई भाई। अरे मेरे को क्यों नहीं शील्ड आ रही? Teamwork is dreamwork! तो भाई क्या है ये डैमेज? अरे भाई भाई फिर। अरे क्या डैमेज है ये? Everybody stand back! Tight! भाई कैसे पॉसिबल है ये? Benny's adventure team, assemble! Oh. Oh. Or not. Off we go! इतना फास्ट भाई? खतरनाक यार। क्या किया यार तुमने? करके चलते अभी। Benny's
पायरो चाहिए बोलते इधर में Ow! तो। Where did that come from? पायरो में क्या लूँ, क्यों? और इसमें क्या लूँ? अटैक बफ रहने दूँ क्या? कि चेंज कर लूँ? रहने देता हूँ। भाई तुम्हारा डैमेज ही इतना है कि मैंने कैरेक्टर नहीं भी लिया तो भी जीत जाएंगे अपन, मेरे को लग रहा है। भाई इतना डैमेज दे कैसे रहे तुम? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Time to act. Wrath of the sky! ये कैसे? Let's light it up! Adventure time! Rain outlines your fate. This is more like Not good. अरे कैसे क्या रोकना है? Body and mind. I let my guard down. Witness the power of Guhua. Time to act. I'm going in. Get to work. Body and mind. Time to act. Time to act. King and Queen should present a united front. Try and stop. Show no mercy. Body and mind. Lolly. Pyroclastic surge. भाई इतना सारा डैमेज। Fulfill our path. Light, that's gonna hurt in the morning. Teamwork is dreamwork. From the sky. Take a breather. ओ भाई पता नहीं है तो। भाई क्या ये डैमेज देगी? क्या डैमेज दे रहे हो? yours, my queen. I shall take the spotlight once more. Everybody, show no mercy. Lolly, eat Papa. Let's light it up. अरे भाई Our performance has yet to conclude. Rain outlines your fate. Know my soul. I'm going in. I dance for you, my dear. Get to work. मर गए तो। Adventure time. ओ भाई खतरनाक डैमेज। और तो कोई कैरेक्टर ही नहीं मेरे पास अपग्रेड करने के लिए। मूवी का टैलेंट है क्या अपग्रेड? अरे ये इसको रखते ही बाकी किसका करूँ मैं सिर्फ हार्ली फिल्मों नहीं चाहिए मुझे। ठीक है फिर तो अभी के लिए। Let's light it up. No one's joined me on an adventure in अच्छा हाँ ages. वो Come on, अच्छा let's हाँ go. हाँ वो तो किया था यार मैं। हाँ वो जो नया आया वही बोल रहे हैं तुम खेलने के लिए वो किया हूँ मैं। लीवी का नहीं ये इसमें मैं हार्ड तक के किया हूँ। मतलब 3 लेवल किया था मैं, उसके ऊपर नहीं किया, 3 लेवल किया। उसके बाद शायद कॉपी होता है कि नहीं होता है पता नहीं,
देखने दो मेरे को, चेक करते अपन एक बार। रुको अंदर जाके देखने दो मेरे को इसमें। ओ भाई तुम हवे में कैसे के चले गए? देखो मेरा ये ये लेवल हुए 3। ओपी में होता क्या है? मीनेंसिंग ओपी में होता है यार, मेरे को पता नहीं था। है डिक्लाइन क्यों करते हो? फेदर मिलेगा? वो फेदर कुछ काम का है क्या? हाँ काम का तो है वैसे, लेकिन अपना होगा क्या? मतलब कैरेक्टर कैसे सिलेक्ट करूँ? पायरो हैज एन एडवांटेज, तो मैं बेनेट और ये ले लेता ना, शैंगलिंग। ठीक है ना, बेनेट और शैंगलिंग। स्टार्ट करूँगा इसको। हाँ इसमें यही लेता ना मैं। सेकंड में क्या लूँ? अरे मेरे पास डेंड्रो कैरेक्टर नहीं है मेरे पास कोई भी। है अरे कैरेक्टर रिपीट भी तो नहीं कर सकते इसमें, तो इसमें क्या लूँ मैं फिर? एक काम करता हूँ मैं फिर, डियोना ले लेता, नहीं शील्ड हो जाती। प्लस क्या लूँ मैं? रेडन ले लूँ क्या? रेडन अच्छा रेडन फिर से नहीं ले सकते। आयाटो ले लूँ, आयाटो। आयाटो ले लेता। ठीक है। इसमें अरे फिर इसमें डियोना, इसमें क्या लूँ मैं? इसमें वो मोविका ले लूँ क्या? पर फायदा है कि नहीं मोविका का इसमें? अरे मोविका ले भी है यार, क्या लूँ मैं इसमें भी? च्योरूस है मेरे पास। रेडन भी तुमने ले ली। सिंचू है यार, सिंचू ले लूँ क्या इसमें? है ही नहीं मेरे पे। ठीक है। लास्ट में डियोना लूँ क्या? तो काजुआ और डियोना लूँ कि कैसे करूँ? यहाँ पे डियोना डियोना ले लेता, ठीक है। यहाँ पे ले लेता काजुआ। ठीक है अभी। ओ भाई भाई, खतरनाक ही चैलेंज है। क्या मालूम क्या बोलते, लेकिन जाने दो।
हर्ड में क्रायो वेट कॉल VR कॉल। अरे कॉल आएगा तुमको? अरे चैलेंज चालू हो गया, तुम है ना? तो मैंने हाइड्रो क्यों नहीं इस पे? हाइड्रो तो कुछ काम ही नहीं आएगा। ये मेरे को पता है नहीं हाइड्रो तो हाइड्रो ले लिया तुमको मारना पड़ेगा। Wind strike. As one with wind and cloud. You two! Time to end! Pyroclastic surge! भाई डैमेज है कि क्या है ये? Wind strike. Clouds high. The birds call. Wrath from the sky! Wind strike. ये क्या है पलक नहीं है? Papa, get One with nature. As one with wind and cloud. The wind knows. ऑलमोस्ट हो गया। 82 seconds. ओके चिलोनिन और रेडन से मार सकेंगे क्या लेकिन तुम? रेडन देंगे क्या इतना डैमेज? मेरे को पता नहीं। Off we go! Off we go! Lava, get them! Hear the echoes of the valley! There is no escape. Nice and spicy. Eat this! Go! Shine down. Everybody stand back! Inazuma shines eternal. Teamwork is dreamwork! Let's light it up! There is no escape. Bring it! भाई ये तो आत्महत्या कर ली थी इसने, भाई हिल भी नहीं रहा है ये तो। क्या है ये? Now you shall perish. अरे मेरे को आइस में डाल देने देना था। हालांकि मेरा डैमेज कुछ काम का नहीं है तुम्हारे लिए। Shine down. Let's light it up! Inazuma shines eternal. Go in! Illusion shattered. You're toast! There is no escape. Torn to oblivion. इसका डैमेज 50 सेकंड्स में हुआ है अपना 107। इसमें टाइम लगा यार थोड़ा सा। दोनों देखो ना अपन हाथ पकड़ के वो भाई स्क्रीनशॉट लेने दो। ओ माय गॉड हो गया भाई खतरनाक। अरे ये क्यों चैलेंज कर रहा है? मैं हट, ये थोड़ी सी अपने हाँ ये चाहिए ना अपने को।
Rain outlines your fate. अरे वे भाई ऑफलाइन की है Rain cutter. कहाँ चले गए वो वे भाई I have dishonored. आए ऑफलाइन भी चले गए Think you can bully me? No, my sword. Whirling snow. Rain outlines your fate. Witness the power of Gua. Can't have Unleash. dream. Do your master's bidding. Shake your hands. तो कोई डैमेज नहीं पड़ रहा अपने को My apologies. Coming down to art. No, my sword. Rain cutter. Whirling snow. Think you can bully me? Diana special. My apologies. Obey. By ordinance divine. Embrace the ice. Rain outlines your fate. Witness the power of Gua. भाई अभी पता डैमेज मेरे को लगा डैमेज क्यों नहीं पड़ रहा था अभी पता Can't have your dream. Whirling snow. Think you can bully me? Coming down to art. Let me read you a verse. Diana special. My apologies. Obey. Take flight. Rain cutter. By ordinance divine. Rain outlines your fate. Backward swirl. Whirling snow. Can't have your dream. तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है होगा नहीं My apologies. Let me read you a verse. चले फेल हो गए चलो जाने तो जितना हो उतना भी अच्छा है वरना लास्ट वाला हो जाता तो बढ़िया हो जाता है जाने तो क्या करना चलो मूवी का वेपन तो मिल गया लेकिन मूवी का
वेपन लगाने नहीं मिल रहा, अपग्रेड नहीं करने मिलेगा, बाकी काम कर लेते फिर मूवी का किए। Forty-eight or 201. डैमेज टेस्ट करना है। इसके पास ये वाला मोड मेरा सोलो हो गया था विदाउट कॉपी। भाई मेरा तो नहीं होने वाला, मेरे पास कैरेक्टर नहीं है ना, मेरे पास कैरेक्टर की बहुत कमी है एक्चुअली। मतलब क्या बोलूँ भी भाई, मतलब मेरे पास सपोर्ट है ही नहीं है, बस काजुआ है एक और बेने थे, तो दो सपोर्ट में तो कुछ होने नहीं वाला है। 1400 हो गए क्या है ये? Light of the blazing sun! आई डैमेज नहीं कर रहा। Incinerate! 10,000 Incinerate! Ha! Full throttle! लगता है वेपन अपग्रेड करके करना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। मेरे को क्या क्या चाहिए इसके लिए मटेरियल, ये तो काफी है अपने पास, ये भी काफी है। ये नहीं यार, ये मुश्किल ही है। है ही नहीं ना ये। हाँ 10 दिन तक के रुकना ही पड़ेगा इसके लिए। चलो ठीक है, ये तो रुक जाते फिर। ये ले लेना तो मेरे को। और काम है, 2 ही ठीक है। Rev the engines! इसको डेवलप करने के लिए 4 चाहिए और ये 1 चाहिए। मावी का अपने पास ये 38 है, ओ भाई, लेकिन अपने पास भाई यही नहीं है भाई, सब गलत। मैक्स कर लो तो मैं 4 चाहिए ना अपने को, 4 है अपने पास। ये हो गया, ये 1 चाहिए अपने को। वो ये और भी कर सकते थे अपन, ये नहीं अपने पास, ये कहाँ से परचेस, ये भी नहीं है ना अपने पास, ये भी लेना पड़ेगा। ये कैसा न्यूक है? अरे बिल्ड नहीं है ना भाई, और वो वेपन में नहीं, ये लगा हुआ है ना 20 वाला, ये वाला वेपन है अभी, इसलिए वैसा न्यूक हुआ वो।
अभी वेपन अपग्रेड हो जाएगा ना, फिर बढ़िया हो जाएगा इसका, फिर ये रेशियो भी सेट हो जाएगा, तब तक के आर्टिफैक्ट भी थोड़ा बहुत काम कर लेगा, फिर ठीक हो जाएगा वो। मेरे अकाउंट में तो मोबिका है भी नहीं। अरे तुम्हारे पास और भी कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, मोबिका की जरूरत ही नहीं है यार तुमको। बाकी तो है तुम तो यार अच्छे अच्छे कैरेक्टर। Which should I choose? चलो फिर कल मिलते भी भाई मॉर्निंग में।